Good afternoon, students. Welcome to my channel. My name is Amit Verma, and today we are going to discuss one of the very important chapters of class 12 ISC and CBSE board, that is aggregate demand under the unit theory of income and employment. Okay. So, what is aggregate demand? Let's discuss in detail. So, in this reference, students, first of all, I would like to tell you that we are studying this under the unit theory of income and employment. तो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं. थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बेसिकली डील्स विद द हाउ द इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड रिगार्डिंग द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन एनी इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. कि इकोनॉमी में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का क्या लेवल रहेगा या उससे रिलेटेड एक जो इक्विलिब्रियम होगा उसको हम इस थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे. So when we talk about the theory of income and employment, that is basically divided into two parts. First is, as you can see, I am drawing a table chart over here. First is the classical view. Okay, first is the classical view, and second one is the Keynesian view. So theory of income employment बेसिकली स्टूडेंट्स दो पार्ट्स में बेस है. पहला व्यू है उसका क्लासिकल व्यू और दूसरा व्यू होता है कीन्सियन व्यू. ओके, कीन्सियन व्यू. नाउ अंडर क्लासिकल अप्रोच वी स्टडी सेल्स लॉ ऑफ मार्केट and under this we study Keynesian model. So this is the basic scenario about this. So classical view was based on sales law of market. Sales law of market was basically propounded by French economist J.B. Say, that means John Baptist Say, and the new Keynesian model was propounded by famous British economist John Maynard Keynes, who wrote the very famous book The General Theory of Employment, Interest and Money in 1936. Okay, so this is about this. So basically we have to discuss, your course includes this thing, Keynesian model, and Keynesian model is based on one key idea that is called aggregate demand. तो Keynesian model एक key idea पे बेस है जिसको हम कहते हैं aggregate demand. Okay, this is the thing. So let's try to understand what is aggregate demand now. Okay, we'll try to understand what is aggregate demand. Okay. So aggregate demand basically students refers to total monetary value that is planned, total monetary value that means planned, which of goods and services that the people of the country are planning to buy in a given accounting year. तो एग्रीगेट डिमांड बेसिकली होती क्या
क्या है? It is the total monetary value of the various goods and services, the total goods and services that the peoples of the country are willing to buy in a given accounting period. It must be noted that aggregate demand is basically planned. We are using the word planned. ये प्लान होती है कि कितना वो एक इकोनॉमी में लोग एक अकाउंटिंग ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज को प्लानिंग करते हैं बाय करने की या परचेज करने की. ओके, एग्रीगेट डिमांड is very important concept, and as you know that aggregate demand is the only thing which according to the British economists can be boosted in the short run so as to increase the level of employment in a country. Okay, so aggregate demand क्या होता है? The total monetary value planned, that means planned value of goods and services that the peoples of the country are planning to buy in a given accounting year. यानी लोग जितना प्लानिंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? Aggregate demand. It is also known as in the books ex ante demand. इसको ex ante demand भी कहा जाता है, वो बुक्स में लिखा हुआ है. ओके, so this is about the meaning of aggregate demand. Now we will discuss the components of aggregate demand. Aggregate demand के components क्या क्या होते हैं? ओके, अगर हम components की बात करेंगे, if we talk about the components of aggregate demand students, तो aggregate demand के components को भी हम क्लोज्ड इकोनॉमी में और ओपन इकोनॉमी में कंसीडर करेंगे. अगर ये क्लोज्ड इकोनॉमी है तो उसके कंपोनेंट्स डिफरेंट होते हैं, और अगर ओपन इकोनॉमी है तो उसमें अलग उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं. क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे फॉरेन सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. ठीक, वहां पे ना एक्सपोर्ट्स होते हैं ना इंपोर्ट्स होते हैं. दैट मींस वहां पे फॉरेन ट्रेड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. ठीक, वो होती है क्लोज्ड इकोनॉमी. और ओपन इकोनॉमी वो होती है जहां पे फॉरेन सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है. ठीक, तो अगर ओपन इकोनॉमी की क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करें तो क्लोज्ड इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट होता है कि जो कंपोनेंट्स है वो है C प्लस I. दैट मींस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. वी विल डिस्कस दिस टर्म्स लेटर. एंड ओपन इकोनॉमी में उसका होता है C प्लस I प्लस G प्लस NX. दैट मींस consumption plus investment per government spending plus net exports, how much we are selling abroad. Okay, so these are the components of aggregate demand and aggregate demand in open economy and closed economy. In open economy it is C plus S, 1 C plus I, that means consumption plus investment, and in an open economy it is C plus I plus G plus NX, that means net exports, and G stands for government spending. Okay, now we will discuss little bit in detail about these things C and I. So C basically stands for consumption expenditure. Okay, consumption expenditure. Consumption expenditure. What is consumption expenditure? Consumption expenditure is the expenditure which is incurred by the household for the purchase of various finance goods and services for their consumption. तो जो हाउसहोल्ड लोग जो इकोनॉमी में हाउसहोल्ड सेक्टर जो भी अपने कंजम्पशन को के लिए जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसको हम क्या कहते हैं? इट इज वी कॉल इट एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ओके, देन वी हैव I means investment. Since as the consumption expenditure is incurred by the household in consumption of goods and services, so I refers to the investment expenditure. Investment expenditure is the expenditure which is incurred by the producer sector for producing final
गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, यानी वो प्रोडक्शन करने के लिए जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते परचेज करते हैं या उसके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर इनकर करता है प्रोड्यूसर सेक्टर, वो कहा जाता है, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में हमारे आता है, दैट कम्स अंडर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। Now G, what does G? As we studied G. G stands for government expenditure. Students, as we know, in an open economy or in any economy, government also comes into a picture when a lot of taxes are imposed by the government and lot of expenditure is also incurred by the government, such as the construction of roads, building of dams and other infrastructural facilities in an economy. तो उससे भी क्या होता है, गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर इनकर करती है, उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, तो उसलिए हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, ओके। जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एंड लास्ट इज एनएक्स, दैट मींस नेट एक्सपोर्ट्स। It is the difference between imports and exports, okay, difference between imports and exports, okay. So C stands for consumption expenditure, I stands for investment expenditure, G stands for government expenditure, and NX, that means net export, stands for the difference between the imports and exports, okay. So this is about the components of aggregate demand, students. Next in the line we are going to do the aggregate demand schedule and aggregate demand curve, okay. This is Y, this is C, that is I, and this is AD, okay. So Y over here, students, means income. हम इनकम का लेवल ले लेते हैं 0, then 100, then 200, 300, 400 and 500. Okay. This is the level of income we have taken. Y as what have been taken as income. Okay. Next, then we have take consumption. Consumption ले लेते हैं 40, then 120, then we can take 200, 280, 360, and now then we can 440, okay. And इन्वेस्टमेंट को हम कॉमन रखेंगे, क्यों रखेंगे अभी हम आपको बताएंगे। 20, 20, 20, 20, 20 and this is also 20. और एग्रीगेट डिमांड नाउ वी डिस्कस इट। सो as students I told you that aggregate demand is equal to C plus I in closed economy, तो इन दोनों का जब हम सम अप करेंगे यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, एग्रीगेट डिमांड। तो इसको अगर हम सम अप करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 40 plus 20 is equal to 60, ये 120 plus 20 हो जाएगा ये 140, then 200 plus 20 is equal to 220, then 280 plus 20 is equal to 300, then 360 plus 20 is equal to 380, and 440 plus 20 is equal to 460. Let's discuss this schedule.
इनकम हमने स्टूडेंट्स लिया है 0, 100, 200, 300, 400. So as per the Keynesian economics, as the income increases, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करती है हमारा कंजम्पशन लेवल भी इंक्रीज होता है. ओके, सोच आप ये रहे होंगे कि यहाँ पे ये जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजम्पशन क्या है 40 है. ठीक, जीरो लेवल ऑफ इनकम लेवल पे, जीरो लेवल के इनकम पे भी हमारे कुछ कंजम्पशन होते हैं. सपोज टेक फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, इफ ही डजंट वर्क, ही स्टडीज, इवन दो ही कंज्यूम समथिंग, सो इन ऑर्डर टू लिव अ basic life or pull the necessities of basic necessities of life, one must incur some expenditure. So ये जो zero level of income पे जो expenditure होता है, तो zero level of level पे जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं? autonomous consumption. autonomous consumption. ठीक, तो zero level of income पे क्या होता है? होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन. ओके, दिस इज द थिंग. नाउ द नेक्स्ट इज दैट वी हैव इंक्रीज्ड दिस कंजम्पशन बाय 80. द कंजम्पशन इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग बाय 80. ओके, constantly increasing by 80. So this is the thing. So investment is 20 in each of the case, because in short run we assume that the investment which is made for creating the employment remains same. तो शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को भी हम कॉमन ही रखते हैं, सेम रखते हैं. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इतनी आसानी से लॉन्ग रन में एडजस्ट होते हैं, शॉर्ट रन में वो एडजस्ट नहीं होते. ठीक, और एग्रीगेट डिमांड हम कैसे निकालते हैं? एग्रीगेट डिमांड को इन दोनों का सम अप करके निकालते हैं. यानी एग्रीगेट डिमांड कैसे बनेगी? C प्लस I, इन दोनों को हम ऐड करते जाते हैं, तो क्या बन रही है? एग्रीगेट डिमांड. ओके, सो दिस इज द थिंग ओवर हियर टू अंडरस्टैंड. ओके, तो this is what we have to discuss. So next we will be discussing the aggregate demand curve. Okay, let's make it aggregate demand curve. I'm not too good at drawings, but I literally can think that you people might understand my things. So aggregate demand curve को बनाते हैं. ये स्टूडेंट, ये OX एक्सिस है और ये OY एक्सिस है. यहाँ पे हमने मेजर किया है इनकम, इस एक्सिस पे इनकम हम मेजर कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने कंजम्पशन and investment. Okay, we are measuring consumption and investment on this axis, that is AD, aggregate demand, on this axis. So let's start. तो अगर आप उस ग्राफ को स्टूडेंट देखें तो हमने उसमें इन्वेस्टमेंट जो था उसको हमने क्या लिया था? सेम लिया था, और जो हमारा कंजम्पशन कब होगा वो थोड़ा ऊपर से शुरू होगा, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हमारा 40 जो था कंजम्पशन था. तो अगर हम जीरो लेवल ऑफ इनकम पे यानी यहां मार्क करते हैं 40, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी 40 कंजम्पशन था, तो यहां हमने 40 इसको अज्यूम किया, तो हमारा कंजम्पशन कर्व क्या? एक स्ट्रेट कर्व जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग जो होगा, एक स्ट्रेट लाइन कर्व हमारा जाएगा जो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, वो होगा हमारा कंजम्पशन कर्व. ओके, क्योंकि वो यहां से 40 से शुरू हो रहा है, इसलिए थोड़ा ऊपर से रहेगा, क्योंकि वो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ कंजम्पशन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन. ओके, सेकंड इन द लाइन इज एडी कर्व. एडी कर्व मैंने आपको बताया था कि एडी कर्व जो भी होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि वो कंजम्पशन कर्व के ऊपर रहेगा, क्योंकि एडी कैसे बनता है? एग्रीगेट वो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट
दोनों को इंक्लूड करके बनता है। तो एडी कर्व इसके थोड़ा ऊपर रहेगा यहाँ कहीं, हालांकि डिफरेंस इनके बीच में वही रहेगा। तो एडी कर्व भी हमारा क्या होता है, एक कांस्टेंट अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा जो ऐसे कुछ जाएगा, ठीक। एडी ये कैसे होगा, ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा। हमारे जो हमने इसमें एग्जांपल लिया था, शेड्यूल लिया था, उसके अकॉर्डिंगली इसके मान लीजिए कि यहाँ पे 20 है, हमने इन्वेस्टमेंट को 20 कॉमन लिया था। तो अगर इन्वेस्टमेंट को हमने 20 कॉमन लिया है तो एट एवरी लेवल ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट वाज कॉमन। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट लाइन कर्व जो होगा, आई कर्व जो है, वो एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो ये कर्व क्या होगा हमारा, ये जो कर्व बनेगा हमारा, ये बनेगा इन्वेस्टमेंट कर्व। ओके, इसको हम आई नाम यहाँ देंगे। अब हम तीनों को समझते हैं कि ये आई कर्व है स्ट्रेट अपवर्ड पैरेलल, क्योंकि यहाँ एट एवरी लेवल ऑफ इनकम पे क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व है। कंजम्पशन कर्व की सी कर्व की अगर हम बात करेंगे तो 40 जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी क्या वो 40 था, तो ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व बना जो अपवर्ड स्लोप करता हुआ गया है। ये बड़ा दूसरे डायग्राम थोड़ा उतना नहीं बनवाया इस पर, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन बुक्स में ऐसे ही है। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, सी कर्व भी, इसको कंजम्पशन कर्व कहते हैं। ओके, और एग्रीगेट डिमांड कैसे होगा, एडी मींस ये होगा सी प्लस आई, ये भी थोड़ा ऊपर से बनेगा, ये भी एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, ठीक। तो ये भी ऐसे कॉन्स्टेंटली अपराइजिंग जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ओके, तो ये था एग्रीगेट डिमांड के बारे में। हाँ, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि ये जो स्टूडेंट यहाँ पे जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, ये जो आप देख रहे हैं जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, यहाँ पे ये बेसिकली ये दिस पार्ट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, इसको कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी जो एक्सपेंडिचर होता है, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंकर कर रहे थे उन्हें, उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। इट इज अनअवॉइडेबल बिकॉज इन ऑर्डर टू लीड इट्स लाइफ अ पर्सन और एनी इंडिविजुअल हैज टू consume food or drink water, so that minimum subsistence level of expenditure is known as the consumption expenditure. It exists even at the zero level of income. So this is all about today, and it was all related to aggregate demand. In the next video we'll be doing the aggregate supply and its schedule, and we'll study more about it. Thank you, have a nice day.